What is the national symbol of India? Four tigers. Four tigers. अशोक का emblem जो भी होगा national emblem. यही है. Agree. सब agree. Four tigers होते हैं. नहीं lions होते हैं. Tigers होते हैं. Lions. Don't want to answer. Tigers होते हैं. No comments. Do we celebrate 26 January? रिपब्लिक होता है तो कॉन्स्टिट्यूशन बना था. Constitution उस दिन बनाया गया था. नहीं उस दिन फ्रेम हुआ था. हाँ शायद लीगली वो आया. Okay. And do you know any of your fundamental duties given in the Constitution? Actually didn't remember. Don't remember your duties. Rights पता है? Fundamental Right. rights. बताओ. Right to vote. So why do we celebrate Republic Day? On Republic Day, the government of India enacted our constitution. Okay. When in which year? 1950. Okay. Who wrote the Constitution? Who wrote the constitution? Dr. B.R. Ambedkar. He wrote it himself. He wrote it with a proper assembly, and you can say with the proper team in the constitution framing body. Constitution किसने लिखा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा था. अकेले? नहीं उनकी पूरी होगी ना लेजिस्लेशन. सॉरी नहीं. एंड कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया की कोई ऑफिशियल लैंग्वेज दी हुई है? उर्दू एंड हिंदी. उर्दू एंड हिंदी आर ऑफिशियल लैंग्वेजेस. हमने पढ़ा था अभी. हिंदी है. हिंदी. What are your fundamental duties given in the Constitution? Name me any three. Fundamental duties, rights तो पता है. Rights. Duties. Okay, duties. What does the Constitution say about fundamental duties? What are your fundamental duties? Fundamental duties, like there are I think 6 or 7 fundamental rights. Rights तो सबको पता है. Okay, there are I think 20 fundamental duties in which there are very. Okay, tell me 5, not okay. 20. 20 is too many. Okay. Protecting the nature. Okay. Yes, it is. Duties, I think here we can. Our duties are derived from the rights only. For example, our right is that we have a right to liberty, but the duty is that our liberty should not be at the cost of somebody else's liberty. Okay. So that can actually be given one point that we should exercise our and rights. so similarly, we have freedom of speech. That's the right, and the duty is we should not harm someone else's We should freedom of exercise speech. our fundamental rights. That's Yeah, the that's duty. one duty. Yeah, that's what our duty is. That's one duty. That's one duty. Constitution में ये reservation के ऊपर कुछ बोला गया है? रिजर्वेशन के ऊपर बोला गया है जो है रिजर्वेशन के ऊपर काफी डिफाइन किया गया है, लेकिन ये रिजर्वेशन सिर्फ 15 इयर्स के लिए थी जो है. Is there any official language of India given? English? Is English the official language? No, Hindi is the official language. Hindi is the official language. Duty क्या है आपकी देश के प्रति? अधिकार तो पता है, ड्यूटी क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कब बनाया गया था? नवंबर 26 नवंबर 26 January 1949. और इंडिपेंडेंट आया था वो इतना पता है मुझे. 2nd December. 2nd December. Yeah. And here? Here I'm not very confirm with the year, but it should be 2nd December. 1951. 1949. 1947. 26 January 1956. 26 January 1950. 26 January 1950. Is the drafting committee head of the Constitution of India? Chacha Nehru. I think so. Dr. Baba Saheb Ambedkar. Constitution बनाने वाले का हेड कौन था? वो समझा मुझे लेकिन पता नहीं. डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर. Dr. Baba Saheb Ambedkar. What is the national emblem of India? नेशनल Emblem. It's the 3 tigers, right? 4 tigers, no? No. 4 tigers. Lion. The horse and the bull and the. Chakra. Yeah. Middle. I'm not recalling it right now. Sorry, Ashoka Chakra. It's not chakra that I know. National emblem. Right. I mean, National emblem Satyamej Jayate. Ashoka Chakra. Ashoka Chakra. No, the thing, that lion thing. Who is the current president? Narendra Modi. Then who is the prime minister? No, Narendra Modi was prime minister.
Now it's Pranab Mukherjee. And Prime Minister? Narendra Modi. After APJ Abdul Kalam. PJ Abdul Kalam. No, he is that. I know that. Okay, after that, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं. President of India कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आमचे हे आहेत ना कोण आहे इंडिया प्रेसिडेंट. इंडिया कौन? मोदी है. इंडिया का अभी प्रेसिडेंट नरेंद्र मोदी. प्रणब मुखर्जी. रिपब्लिक डे कॉल इन हिंदी. प्रजातंत्र दिवस. रिपब्लिक डे राष्ट्रीय दिन. गणतंत्र दिवस. हिंदी हिंदी रिपब्लिक डे कब मनाया जाता है? मतलब रिपब्लिक डे मतलब यहाँ संडे को ज़्यादा रस रहता है. नहीं, रिपब्लिक डे अभी आने वाला है ना. हाँ, उसका डेट क्या है उसका? ये तो नहीं पता.